Hello, guys. Welcome back to a new session. So, today we will be discussing yesterday the Hindu article which came on plastic pollution. As you can see, it's in print. So, let's get started. So, this is just a raw presentation. I will be reading just like you, and I haven't prepared anything, and I will show you how to read in the way which is useful for the exam preparation. So, let's start it. So it's talking about plastic pollution because recently world is coming together for a treaty on plastic waste so that we can reduce it and at the time we can just like completely stop plastic waste. So, but it hasn't been able to like materialize this till now. So UNEP has already backed the resolution, but as a resolution is not a binding instrument, so world needs some binding so that countries can follow the target and get penalized if they don't. So the question here is talking about that plastic waste should be this treaty should be only limited to like waste production or also like the initial point where plastic is produced, like it is dealing with the complete life cycle approach of the plastic, and like they are thinking that we should deal with both or not. And the other is funding, which is also a very important and emotional thing. Developing countries need funding and capacity building and technology transfer for this purpose, but it all depends on the a rich country to give or not because money is an asset and they don't want to give it for free. So, what are the challenges from plastic? So, he is talking about, let's read it. What are the challenges? No material symbolizes the global industrial consumption like plastic. Plastic. Okay, it's talking about how much important plastic is. Polymer say it is made and they can be natural. So ये देखना cellulose lignin it's written. Cellulose is also found inside the cell, and lignin is also found inside the cell. So I think एक से सेल वॉल बनी होती है और एक के बाद लिमिटेड लाइक कुछ परसेंटेज होता है 80% 20%. इट्स बोथ इज इनसाइड सेल. ठीक है. एंड लाइक एंड you can double check it. I'm just answering based on my knowledge, which may be incorrect also because so cellulose and lignin is also like comes from tree from which paper is made. So both are related to that also. Paper pulp, nearly everything in nature. So polymer say polymers are like chain of uh, carbon things, I think. So like so there are और मेड इन लैब्स ऑल्सो. नेचर में तो पॉलीमर को सेलुलोज बोलते हैं और जो वो मिलते हैं लैब में बनते हैं वी नीड लाइक पॉलीथीन एंड मच मोर लाइक दैट. Fossil fuel shaped into objects in general called plastic. We know that we this should be known that many people don't know, like they are just reading but don't know. The plastic is made from for crude oil. It is made. It's made from fossil fuel. Uses not important. Add to that, its low cost of production relative to materials such as glass and aluminium. So it is like cheaper as compared to other material, aluminium and glass, and it is like ubiquity means I think a total everywhere can be used.
and cheap also. So, so that's why it has become because everything, if it is found everywhere and it is cheap, so it will become a source of litter. We can't see aluminium litter because it's not cheap and it can be recycled. However, plastic flexibility also implies its persistence. So chemicals, 16,000 chemicals used is a little known for human known. So कितने chemical लगते हैं for making it. So some chemicals are of concern and which are present in PVC, polyurethane, PET. PET बॉडी से बनती है PET से काफी फॉर्म भी होता है कुछ polyethylene given that most of these are synthetic and non-biodegradable. So plastic are biodegradable. ठीक है ये देखना most are non-biodegradable but plastic is biodegradable. It's not an all plastic are not biodegradable like that. Over the years, however, has been a body of science when how this chemical that is. And now because because problem is also with the chemicals which is used in the making of this. So now the ill effects of it. Ethylene, propylene, styrene, and derivative commonly used to make plastic. Ethylene is a polypropylene. Largest portion of downstream petrochemical used to make plastic packaging. So this is our the, the these all are the like final output from the industries. Plastic packaging really used here, and like there are also chemicals. Plastic में there are also concern is about chemicals. Bisphenol, phthalates, phthalates, polychlorinated biphenyl, PCB, polybrominated diphenyl ether, and per polyfluoroalkyl substance. PFS. इतना बड़ा था पर polyfluoroalkyl substances. ये इस पे थोड़ा आप गूगल करना ये एग्जाम रिलेटेड है ये आ रखा है अब देखना है ये कहाँ पे है इसका PFAS पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लाइक उसमें उसमें है इसका क्या बोलते हैं सनस्क्रीन में यूज होता है ना जो बीच में और उसमें जो ओशन में जाके तो ये कंसर्न का है इसके ऊपर आया था न्यूज तो ये इम्पोर्टेंट है यूज टू प्रोड्यूस फूड कंटेनर्स ड्रिंक बॉटल ये फलाना क्या क्या बन रहा है For years, there have been a bulk of studies where medical researchers have investigated exposure to coronavirus why the products used is having and launched the dashboard that have linked in thyroid. So thyroid पे hypertension, kidney, testicular cancer, gestational diabetes to exposure to this chemical. And the vast majority of these being studied are in the associative in sense that the result is the result of exposure to chemical as well as range of other factors. These are part of the effect. So yeah, problem है कि the thing also uh, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट आया नहीं बस ये देख लिया सेलुलोज और लिग्निन कहाँ पे आता है सेल में या उसमें माइक्रोप्लास्टिक सो माइक्रोप्लास्टिक है कि ये प्लास्टिक स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर ये डेफिनेशन याद कर लेना 5 मिलीमीटर से छोटा आर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर ना हाफ सेंटीमीटर हो गया एंड कैन रेफर टू कॉन्स्टेंट एलिमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ एडिटिव और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स
मतलब प्लास्टिक छोटे टूट जाना या केमिकल रिलेटिवली दे हैव ऑलरेडी फॉलन, तो ये ब्लड में जा चुका है, ब्रेस्ट मिल्क में, प्लेसेंटा एंड बोन मैरो में भी जा रहा है। तो प्लास्टिक का तो प्रॉब्लम था ही, एनवायरमेंटल प्लास्टिक का एनवायरमेंटल डैमेज है, और प्लास्टिक में जो केमिकल यूज होते हैं उसका रिएक्शन विद बॉडी, अदर देन दैट प्लास्टिक फिर वो टूट के जब माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है तो वो ब्लड में चला जाता है, रिपोर्ट्स आते हैं ब्रेस्ट में, विच कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। और फिर ये माइक्रो प्लास्टिक और टूट के नैनो प्लास्टिक बन जाता है जो बहुत ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है, तो वो और रिस्क हो जाता है। तो व्हाट इज इंडिया डूइंग अबाउट प्लास्टिक? देयर इज अ बैन इन द प्रोडक्शन यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, बैन हो रखा है। नॉट ऑल स्टेट इन इंडिया हैव बैन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि नॉट ऑल स्टेट इन इंडिया हैव बैन दैट। और कुछ खास है आर्टिकल में, पर and these are the category of plastic goods that are the least reusable and difficult to, तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? लीस्ट रीयूजेबल एंड डिफिकल्ट टू रिसाइकल, given that they constitute a waste management law, India has a range meant to push companies toward ensuring that processed plastic that is used are collected back. It's main problem. तो ये है कि अ, ये भी था कि ये इंडिया में है कि भाई द कंपनीज हु आर मेकिंग यूजिंग दिस लाइक producing this plastic should be responsible for the waste। तो इसके लिए क्या कर रखा है पता नहीं, प्लास्टिक के लिए है या नहीं है, शायद है। ये बाकी वेस्ट के लिए भी आया था गाइडलाइंस की, लाइक इलेक्ट्रिकल वेस्ट के लिए कंपनी क्या करती है, क्रेडिट्स बाय करती है, और कोई एजेंसी या थर्ड पार्टी, दे रिसाइकल दैट, they get credit, and that credit is bought by the company, they don't want to recycle themselves। तो एक ग्रीन प्रोसेस है ये, सस्टेनेबल। तो अलग बैग, ठीक है, वही इंडिया में वेरी reckless attitude towards this in the society and in the policy makers, along with judiciary is also sleeping। तो सारे branches of governance is dead। मीडिया भी है अलग सपोर्टिंग जो भी है, हेल्प द प्लास्टिक सिटी एंड सेलिब्रिटी समझ, तो वही है कि एनवायरमेंटल इशू एंड हेल्थ इशू प्लास्टिक की वजह से। इस आर्टिकल को आप रीड करोगे, यू शुड आप फिर गूगल करोगे तो वही है, प्लास्टिक की वजह से दो इश्यूज आते हैं, एनवायरमेंटल एक हेल्थ। तो एनवायरमेंटल तो वही है कि भाई सॉइल पॉल्यूट कर देता है, और ड्रेन क्लॉग कर देता है, और भी जो भी हो सकता है, कुछ क्या होता है, कोई रिएक्शन होके ओजोन ओजोन में भी कुछ हो सके, जल प्लास्टिक चलाने से एयर पॉल्यूट होता है। एंड फिर हेल्थ वाला है, विच इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज दिस, कि भाई वो माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है, ब्रेन बैरियर में जा सकता है, फूड में बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो ये है। तो इंडिया में वही एटीट्यूड है, मे बी इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू आता है, कुछ कंपनीज आर हैव वेरी बिग stake in plastic industries like Adani, many much more। Abhi, I think there was a recent news also, Indian government is have like, not news, Adani, I'm sorry, Ambani have come into this business। This was news some months ago, I have read it, that इंडिया का जो प्लास्टिक वाला था, पता नहीं कोई हार्ड टाइप प्लास्टिक कुछ है 5 मिलियन टन ऐसे, तो उसमें से इंडिया ही not able to fulfill that domestically and in imports। So Ambani has like investment made to increase the capacity of that। तो वो न्यूज आप लिंक कर लेना थोड़ा गूगल पे देख के, क्या था अंबानी एंड दैट। एंड प्लास्टिक का तो ये हो गया। और आपने पढ़ लिया, प्लास्टिक इतना कुछ खास था नहीं, आई डोंट नो कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए। सेलूलोज और लिग्निन देख लेना, और प्लीज कमेंट में मुझे बता देना क्या होता है, थोड़ा मतलब डेफिनेशन मत करना, थोड़ा करके कि कहाँ पे मिलता है, क्या होता है, कितना लिग्निन परसेंट होता है, कितना सेलुलोज होता है, कौन ज्यादा होता है, ऐसे करके
please tell me in comments, and I will be very happy to learn from you also. और इसके अलावा यही है, आप इंडिया का वो प्लास्टिक का था ऑल्सो 15 नैनोमीटर कुछ था जो इंडिया ने साइज को इंक्रीज कर दिया, छोटे कुछ ऐसा भी आया था, वो भी आप गूगल कर सकते हो. दिस वॉज जस्ट अ वे ऑफ रीडिंग हाउ न्यूज शुड बी रेड. कुछ प्रेशर नहीं है, मे बी some point you don't know, but many news have gets connected. If you do something, put that in on Google, ChatGPT, you will get something. Then again, open some link, and it all gets connected, and that's how it's productive thing and helpful finally. वरना इस आर्टिकल में तो कुछ है ही नहीं, नथिंग, स्किप कर देना, कुछ भी नहीं है इसमें. तो आप इसमें ये कर सकते थे कि इंडिया कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में, इंडिया की कितना. हाँ, और एक और जो मुझे इसमें से आ रहा है यहाँ पे कि भाई प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग रोड. अभी रिसेंटली जो ये भी न्यूज है, अभी जो दिल्ली यूआर में एक्सप्रेस बना है, इन दैट द गाजीपुर लैंडफिल 7 मीटर हाइट हैज बीन डिक्रीज बिकॉज द वेस्ट फ्रॉम इट हैज बीन यूज्ड टू मेक इट. और ये आई थिंक ये ऑल्सो दिस वाज आल्सो केम some research was also there to replace tarmac asphalt with plastic to increase the durability of the road. तो इसको भी आप एक बार देख लेना. And thank you, and I really love teaching you, and hope so videos will continue to come and will help you a lot. देखो भाई, it should be an enjoyable process learning, और काफी helpful होता है न्यूज़पेपर for your learning. अच्छी न्यूज़पेपर. And again, I will be recommend that the Hindu Business Line editorial are the best. और उसके बाद the Hindustan Time as a newspaper is also very good. Thank you.